Hello, everybody. Welcome to our channel. We are today going to start a new lecture of P block elements. This is lecture number one, where we will go through the introduction of this chapter, chemistry chapter. Okay, so let us move forward. So this is the introduction part of the chapter. Like this the text over here. So I'm just reading the text and just explaining to you as well. Basically, P block elements, we have different types of block in our periodic table: S block, P block, D block, and F block. D and F block is there in the chapter number 4 of class 12 in organic chemistry, but P block is out of syllabus. So, however, you need to know it well. What is P block elements if you are preparing for other exams? In P block elements, the last electron always enters in the p orbital of valence shell, and as you know, that the number of p orbitals is 3 and number of s orbitals is 1. So 1 can accommodate 2 electrons and 3 can accommodate 6 electrons. So therefore, the maximum number of electrons that can be accommodated in a set of p orbitals is 6. Consequently, there are 6 groups of p block elements in the periodic table, which is numbered from 13 to 18, as you can see in this table, periodic table. This is a group from 13 to 18, and in this group, you can see this group 13, group 14, group 15, group 16, group 17, and group 18, except helium. Because helium does not have electronic configuration, general configuration, which is entering in T. It's entering in S only, which is 1:2. So this is the period, okay, and this is the group. So boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family, fluorine family, and neon family. These are the families of the p block elements. And the general electronic configuration is this one, NS2, NP1 to 6. So we have the groups from 13 to 18, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and helium, which are leading the groups. So their valence electronic configuration is NS2, NP1 to 6, except for helium. Helium leads the group, yes, not neon. Helium leads the group, but except helium. Except helium, everyone has the electronic configuration, which is NS2, NP1 to 6. Okay. So inner core of the electronic configuration, however, it can differ. So the difference in inner core of elements greatly influences the physical properties, such as atomic and ionic radii, ionization lethality, and etc., as well as chemical properties. As you can see about the inner core elements, like basically the elements of the P block. So it is influenced. It has diversity of physical properties. It has diverse atomic radii, ionic radii, ionization enthalpy. It has diverse chemical properties. It is diversified group. Consequently, a lot of variation is seen in the properties of elements in a group of P block. So the maximum oxidation state, here is the one point I must say, that the maximum oxidation state shown by a p block element is equal to the total number of valence electrons, which is n. Okay, n, capital N, I am just representing for the valence electrons, total number of valence electrons, which is 3, 4, 5, and so on. Okay, that is the sum of the s and p electrons only. And clearly, uh, the number of possible oxidation states increases towards the right of the periodic table. So towards the right of the periodic table, as you move there, so towards the right of the periodic table, okay, the number of possible oxidation state increases. I can show you in the following slides. It will be there. Don't worry about it. And in addition to this, also oxidation state, like we see plus n, isn't it? Like number of valence electrons is n, so it is represented by plus n also. So p block elements may show other oxidation state which normally, but not necessarily, differ from the total number of valence electrons by unit of n minus 2. Less than 2. Number of valence electrons less than 2 is there. Okay. And what this means, let me just clear once again tell you. That about the valence electrons, about the oxidation state, you know that how much is the tendency it has to lose again, that we see in the valency, isn't it? So that is there. About oxidation state also, group oxidation state, if we talk about, like of all the groups, boron group, carbon group, all the group 30, from 30 to 18, it has various oxidation states. So which is represented by plus n. Generally, I'm telling you, generally, isn't it? So generally they have plus n, but since it is a P block, so chemistry is a full of exceptions. So yeah, P block elements may also show other oxidation states,
isn't it? Which normally shows, but not necessarily all shows the same, and it differs from the total number of valence electrons, obviously, which is by n minus 2. Okay. Uh, Boron, carbon, nitrogen families. These are the families, most popular families in the periodic table, which have the group oxidation state, have the most stable oxidation state for the lighter elements. And the oxidation state, which is 2 units less than the group oxidation state, which is n minus 2, it like oxidation state which has 2 units less than the group oxidation state becomes progressively more stable for the heavier elements in each group. So the lighter elements in the group has most stability oxidation state, and for the heavier groups, it shows more stable progressively. The occurrence of oxidation states 2 units less than the units 2 units less than the group oxidation states are sometimes attributed to the inner pair effect. We can see in this illustration number 2, which is in the upcoming slide. I will tell you that what you mean by inner pair effect and what do you understand by the inner pair effect. So moving to the next slide. So this is just the P block elements. Just go through once again P block. Okay, I'm just switching off the video. You may just go through once again. There's the thing. Okay, take a screenshot. If possible, you may take. If not, then it's okay. These are just the P block elements is over here. Okay, so P block elements are here. Uh, just a moment. Yeah. So we can see that this has been taken from the sciencenotes.org source, whatever source it is. But just you can see that this is the S block elements, this is the D block elements, this is the F block elements, and this is the P block elements. F block elements has lanthanoids and actinoids. This is the S block elements, which has basically alkali earth metals. And this is the D block elements, which is called the transition elements, which can show DD transition. I will tell you more about this in the later upcoming lecture. So till then, just have a look on this PPT in the slide, which is showing the table, important oxidation states of P block elements. Here we have the table from group 13 to 18, and 4 pointers are there. General electronic configuration of group 13, 14, 15, 16, 17, 18. First member of the family, what is the group oxidation of group 13, group 14, group 15, and so on, and what is the other oxidation states possibility, isn't it? So, if we talk about group 13, its general electronic configuration is NS2NP1, NS2NP1. And the first member of this group is boron. And group oxidation state means overall the oxidation state is +3. But we can see other oxidation states also, which is +1. For the group 14, general electronic configuration is NS2NP2, NS2NP2. So we were in the group 14. Yeah, just a break I've taken. Okay, so let's start. So this first member of this group 14 is carbon. Oxidation number is +4. As you can see, that carbon has 4 valencies. So it can have 4 valencies. So 4 oxidation state can be seen, group oxidation state. And other oxidation states you can see is +2 and -4 oxide. For group 15, we have NS2ND3. First member of this is N, and its group oxidation state is +5. And other oxidation we can see +3 and -3. For group 16, which is the oxygen family, we can see the electronic configuration, general electronic configuration is NS2ND4. And the first member of the group is oxygen, which has group oxidation state is +6. And another oxidation state +4, -2, and +2. For about group number 17, we have general electronic configuration NS25. First member of this group is fluorine, and the group oxidation state is +7. And we can see over here the other oxidation state, we can see +5, +3. Then we have +1, -1 also. Many possibilities are there in the group 17 because this group has the tendency of showing the electronegativity property, isn't it? So, yeah. So let's talk about group 18. So group 18, it has NS2NT6, which shows slightly, I must say,
Uh, yeah, like novel gas electronic configuration, which has the first member helium, the leading family of the helium family, and it is the group oxidation state plus 8. As you can see, it's completing octet, isn't it? Duplicate, octet, isn't it? It is completing. So we can say the group oxidation state is 8. Other oxidation state it can be seen as the plus 6, plus 4, and plus 2, isn't it? So just a paragraph there, just I need to tell you about that paragraph. What I have written over here is that the relative stabilities of these two oxidation states, group oxidation state and 2 unit less than the group oxidation state, may vary from group to group. Like the two oxidation states are there. Number one is the group oxidation state, and number two is the 2 unit less than the group oxidation state, n minus 2. It varies from group to group. Group 13 to group 18, it varies completely. And let me tell you one more point over here, which is there in the continuously. That is, the non-metals and metalloids exist only in the P block of the periodic table. Non-metals and metalloids are there only in the P block. So non-metallic character of elements it decreases down the group. This is the isn't it? This is the period. This is the group. Group period. Okay. So it decreases down the group. So as you can see about the non-metallic character, if we see about the non-metallic character, then if I can say nitrogen, oxygen, fluorine, carbon, these have the basically more like most non-metallic character, isn't it? And the heaviest element in each block has P block group has the heaviest element, and that has the most metallic nature. So you can see the non-metallic nature also, the metallic nature also. So this change from non-metallic to metallic character, isn't it? Heaviest one is the metallic in nature, and non-metallic character decreases also. So that means if non-metallic character decreases, then metallic character increases. And you can see over here is that if you want to just find out the heaviest metal, heaviest element of group 13, non-metallic character is decreasing from the group, isn't it? Decreasing down to the group. Down the group, non-metallic character is decreasing. So the metallic nature will increase. And when the metallic nature will increase, then you can see that it is the heaviest element, not metal. So you can see about nihonium. Nihonium is the post-transition element also because it's just after the transition element. This is the D block. D block. Okay, this is the D block. So just after D block, this element is the post transition. Pre-transition, post transition. Post transition element. This is also one of the radioactive element also in the P block. Moreover, it is the heaviest, which has the atomic mass 286. Can you imagine? 286 it has. So that means the heaviest element of the P block, the heaviest element in each P block is the most metallic nature. That means it is the most metallic nature in group 13, isn't it? And where I was, yeah. So this change from non-metallic to metallic characters, you can see this change. It brings diversity in the chemistry of these elements depending on the group to which they belong. So in general, non-metals have higher ionization enthalpies and higher electronegativities than the metals. Hence, metals readily form cations and non-metals readily form anions. Yes, this is correct. This is correct that metals readily form cations and non-metals readily form anions. So the compounds formed by highly reactive non-metals with highly reactive metals are generally ionic. You can see the example of NaCl. If you talk about NaCl, then NaCl is generally ionic. Sodium is also a very highly reactive, and chlorine is also a very highly reactive. So very highly reactive, it generally forms ionic. You can see that when the sodium reacts with water, sometimes you can see sometimes, not rarely also, always you see burning of sodium. That's why sodium is not kept under water. Otherwise, it catches fire. It catches fire soon. That's why it's kept under kerosene oil. This is one of the most important questions in the class 8 chapter, metals and non-metals. So we read here in this class 12. So 4 years back, what you studied in the chemistry of the class 8, you're studying right now in class 12. So this is the way you see the chemistry basics from class 8 to class 12 if you chose PCM or PCB.
So why are they generally ionic? Because of large differences in the electronegativities. Sodium has any electronegative. Chlorine has also another electronegative, but chlorine is more electronegative than sodium. Yeah, it's more electronegative than sodium. So that's why we can see the variations in the electronegative, and generally they are ionic because of this. So while compounds formed between non-metals themselves are largely covalent in character. Compounds which are formed between non-metals, like non-metals bonding, they have large covalent character. Because of small differences in electronegatives. Chlorine, this will have large covalent character because both are the electronegative element, both have the same electronegativity value. So what to do about with this? Isn't it? Are you understanding what I'm telling? So the change of non-metallic character to metallic character is indicated by the nature of oxides they also form. So the non-metal oxides are acidic or neutral. Various metal oxides are basic in nature. So you have to remember this, that which oxides are acidic or what type of non-metal oxides are there. So non-metal oxides are acidic in nature or neutral in nature. Various metal oxides are basic, always basic in nature. There's no exception, my dear. There's no exception. So this is the question. I'm just giving you a few moments to solve this, isn't it? So let you solve first, then I'll solve it. Match it. First you match, then I will tell. Try to match. Try to find out from the options. I've already told you what I have just talked right now. This is based on my lecture that I delivered right now. If you have understood well, if you have listened well, my points, if you have noted it also, then this is a very nice question to you. Okay, time's up. Solution is option A. Let's talk about nihonium. As I've told you earlier, also in the like just only I've told you, not earlier, that nihonium is a synthetic radioactive element also, and it belongs to boron family also, being the heaviest element and has the most metallic character. Also, it is the most transition element also, post transition element. Just after the transition element is located. So that's why we say post transition element. Let's talk about fluorovium. Fluorovium is synthetic radioactive element and post transition element. Fluorovium, where it is fluorovium? Fluorovium. Just find out where is fluorovium. Yeah, here. It's in the carbon family. It's in the carbon family. You can see here, like it has the heaviest element, that is most metallic character, isn't it? Most metallic character. So here, since carbon family is not mentioned in the list too, so that's why it has only two options, which is subjective radioactive element and the post-transition element, since it is located just after transition element. So निहोनियम लाइन जो आप देखोगे वो तुम्हारा पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ओर जाता है. मॉस्कोवियम के बारे में बात करें, मॉस्कोवियम कहाँ था सर? मॉस्कोवियम, ये देखो, ये रहा मॉस्कोवियम. मॉस्कोवियम है, फिर लिबरमोरियम है, टेनेसिन है और ऑर्गेनाइजेशन. ये जो है ना, ये सब तुम्हारा जो है ना सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट भी है. तो सबका ऑप्शन जो है 2 6 तो होगा ही होगा. मुस्कोवियम के बारे में बात करें तो 2 6 भी होगा, 4 भी होगा, क्योंकि वो नाइट्रोजन फैमिली में भी आता है. तो नाइट्रोजन फैमिली यहाँ पे ऑप्शन में है, तो नाइट्रोजन फैमिली भी सिलेक्ट हो जाएगा. अब बात करते हैं लिबरमोरियम के बारे में. लिबरमोरियम में जो है तुम्हारा केवल दो ऑप्शन के साथ जाएगा. लिबरमोरियम जो है तुम्हारा नहीं दिया हुआ उसका ऑक्सीजन फैमिली में, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया ऑक्सीजन फैमिली, इसलिए ऑक्सीजन फैमिली नहीं रखेंगे. हम लोग जो है सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे और पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे. तो ये अगर बात करें टेनिसन के बारे में, टेनिसन जो है वो तुम्हारा सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है. ठीक है, टेनिसन जो तुम्हारा हाइड्रोजन में भी आता है, क्लोरीन वाले फैमिली में आता है, फ्लोरीन वाले फैमिली में आता है. और साथ ही साथ जो पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट भी है, क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद लोकेटेड है, लोकेशन की वजह से ऐसा बोला जा रहा है. और अगर बात करें ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो नोबल गैस है और सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है. पोस्ट ट्रांजिशन नहीं है, पोस्ट ट्रांजिशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है पोस्ट ट्रांजिशन? क्योंकि देखो ट्रांजिशन एलिमेंट वो है ही नहीं ना, क्योंकि वो कोई ट्रांजिशन शो नहीं कर सकता, ना डीटी ट्रांजिशन, ना कोई तरह का कलर भी शो कर सकता है. ठीक है, कलर जो है तुम्हारा बेसिकली शो करता है, नियॉन गैसेस जो है उसको शो करता है, उसमें एक्सेप्शनली है तुम्हारा, सबके सब एक्सेप्शनली है ना. तो इसीलिए ये सब एक्सेप्शनली है.
तो तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो नॉर्मल गैस में आता है, तो इसलिए नॉर्मल जो जैसे नॉर्मल गैस होता है उसका बेस केवल तुम्हारा वो सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि वो सीरीज में आता है। और तुम्हारा नॉर्मल गैस भी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहा जाएगा, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट किसको नहीं कहा जाएगा, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। पर हर चीज तो कहेंगे जरूर कि मेरे को भी डाउट लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन 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 जो है, क्या वो मतलब कि पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है? क्या लगता है तुमको? एंड पोस्ट ट्रांजिशन, क्या लगता है पोस्ट ट्रांजिशन है क्या? एज पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो मेरे पास पुराना वाला है, उसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि वो पोस्ट ट्रांजिशन है, बट हाँ हाईली रेडियोएक्टिव तो बता तो रहा है। हाईली रेडियोएक्टिव है, ठीक है, क्लासिफिकेशन जो नॉर्मल गैस में आता है, तो इसलिए इंटेंसिव इफेक्ट्स की वजह से, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स की वजह से साइंटिस्ट जो है बेसिकली मतलब कह रहे हैं कि वो जो है पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाए। आपको ये क्लियर होगा, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एनालॉगस बिहेवियर फर्स्ट मेंबर। इफ वी टॉक अबाउट एनालॉगस बिहेवियर फर्स्ट मेंबर, सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफर्स फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप इन टू मेजर रिस्पेक्ट्स। ठीक है, दो मेजर रिस्पेक्ट से डिफर करते हैं। पहला, साइज और अदर प्रॉपर्टीज के बारे में जो डिपेंड करते हैं साइज पे। दूसरा, इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल ऑफ हेवियर एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स एंड द लैक इन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो जो इफेक्ट होता है डी ऑर्बिटल्स का वैलेंस शेल में हेवियर एलिमेंट्स का, जो स्टार्ट हो रहा है थर्ड पीरियड से, और फिर वो नहीं है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स। तो जो सेकंड पीरियड एलिमेंट से पी ब्लॉक का, वो स्टार्ट होता है बोरॉन से और रिस्ट्रिक्टेड है टू मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ फोर, फोर तक ही मैक्सिमम कोवेलेंस तक है, जो कि 2s और 2p, जो कि तुम्हारा 2s और ठीक है, मतलब कि 2s ऑर्बिटल्स होगा, 2s2, ठीक है, और उसका तीन गो 2p ऑर्बिटल्स यूज होगा। So while the third period elements of p block with electronic configuration 3s to 3pn have the vacant 3d orbitals lying between the 3p and the force levels of energy, using these d orbitals, the third period elements can expand the covalence above 4. हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है पी ब्लॉक का, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s to 3pn के साथ होते हैं, उनके पास जो वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स रहता है, ठीक है, जो कि तुम्हारा वो जो याद है एस सर्कल वाला, ठीक है, जो तुमने एटॉमिक चैप्टर में पढ़ा, तो उसमें तुम्हारा था 3p और 4s लेवल्स, ठीक है, एनर्जी का। तो एनर्जी लेवल्स जो एनर्जी लेवल डायग्राम में तुम देखोगे कि 3D वैकेंट जोड़ा जाता है, वो 4s से क्रॉस करता है तो 3D पे नहीं टच करता है, पहले 4s पे आएगा तब जगह 3D पे जाएगा ना, है ना, ऐसा होता है। तो ये सब जो डी ऑर्बिटल्स जो है, ये सब यूज होते होते क्या होता है कि जो थर्ड एलिमेंट है वो एक्सपैंड करते अपना कोवेलेंस है, सब लोग एक्सपैंड कर सकते हैं, तो खाली जगह तो खाली जगह पे एक्सपेंशन हो सकता है। जैसे कि मान के चलो कि बोरोन जो है फॉर्म करेगा Bf4, एल्यूमिनियम फॉर्म करेगा Al6, जगह हो क्या मतलब जगह का एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। तो जो प्रेजेंस होता है डी ऑर्बिटल्स को इन्फ्लुएंस करता है केमिस्ट्री ऑफ द हेवियर एलिमेंट्स इन अ नंबर ऑफ अदर वेज। बहुत सारे तरीके से जो है डी ऑर्बिटल्स का प्रेजेंस जो है केमिस्ट्री को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स को हमेशा पूजा करते रहना चाहिए। जय हो डी ऑर्बिटल्स की जय। ठीक है, तो the combined effect of size and availability of d orbitals considerably affect the ability of these elements to form pi bonds। ये पता है कि जो तुम्हारा कंबाइंड इफेक्ट जो है साइज का और अवेलेबिलिटी जो है डी ऑर्बिटल्स का, वो कंसिडरेबली अफेक्ट करता है तुम्हारा अबिलिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स डी ऑर्बिटल से फॉर्म करने में मदद होती है। तो जो फर्स्ट मेंबर तुम्हारा ग्रुप को वो डिफर करता है बाकी सारे हेवियर मेंबर से, ठीक है, इन इट्स एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स टू इटसेल्फ। इटसेल्फ में जो बॉन्ड फॉर्म करेगा वो पी पाई होता है। फर्स्ट मेंबर हमेशा ऐसा ही करता है। अब जैसे कि कार्बन फैमिली है, तो कार्बन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है वो कार्बन है, तो कार्बन अपने में बॉन्ड जल्दी बना लेगा, नाइट्रोजन अपने में बॉन्ड जल्दी बना लेगा, और वो अदर रो एलिमेंट से भी कर लेता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बना लेगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बना लेगा, आइसोसाइनाइड में साइनाइड दो बना लेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा। तो ये जो इस टाइप का जो पाइप बॉन्डिंग है, ये पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है हेवी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो जो हेवी एलिमेंट्स जो है वो पाइप बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, बट वो इन्वॉल्व करते हैं डी ऑर्बिटल्स को भी, जैसे डी पाई पी पाई या डी पाई। तो ये इसीलिए जो है मतलब कि डी ऑर्बिटल्स का ज्यादा पूजा करने लायक बनता है। ठीक है, अब 30 मिनट तो हो गए हैं, 40, ठीक है, 10 मिनट और है, ठीक है, 40 मिनट से ज्यादा मैं लेक्चर नहीं लूंगा। ठीक है, तो देखो भाई, अ, जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स जो है, ठीक है, उनका हायर एनर्जी होता है पी ऑर्बिटल से,
तो वो जो है मतलब कि स्टेबिलिटी की तरफ लेस कंट्रीब्यूशन रहता है उनका मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, जितना पी पाई बॉन्डिंग करता है सेकेंडरी एलिमेंट्स में, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स में हाई एनर्जी तो है पी ऑर्बिटल से, बट फिर भी कंट्रीब्यूशन जो है वो लेस देखने को मिला है। फिर वो जो कंट्रीब्यूशन नंबर जो है स्पीसीज हैवियर एलिमेंट्स का, वो ज्यादा हो सकता है फर्स्ट एलिमेंट के लिए सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि मान के चलो कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, दोनों नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन आयंस तो बना लेगा, NO3 भी बना लेगा, जो कि 3 कोऑर्डिनेशन विद पाई बॉन्ड इन्वॉल्विंग वन नाइट्रोजन पी ऑर्बिटल, और PO4 3- बना लेगा, 4 कोऑर्डिनेशन, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट तो है +5। बट हाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हाइयर हो जा रहा है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जा रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जा रहा है। 4 कोऑर्डिनेशन हो जा रहा है PO4 3- में, जो कि इन्वॉल्व कर रहे हैं एस ऑर्बिटल्स के भी 2, पी ऑर्बिटल्स के भी 3, और एक टी ऑर्बिटल भी इसमें कर रहा है। तो 1 3 4 हो गया। 4 जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है तुम्हारा डी पाई बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म कर रहा है इसको। तो इसलिए ये जो है एनिमल्स बिहेवियर देखने को मिलता है, बट हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने तुमको बताया। अब जैसे कि क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन नहीं, ठीक है, फिर उसके बाद मीटिंग एंड हो जाए 2 मिनट। अब ये है, ठीक है, इसको मैच करो, मैं तुम्हें 20 सेकेंड्स का वक्त दे रहा हूँ, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, टाइम सर। ऑप्शन बताएं कौन सा करेक्ट, कौन सा करेक्ट लग रहा है, A B C क्या लग रहा है? बी का, बी सही है, बी सही है। अब समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्या क्या मतलब कि कैसे कैसे आपको सीखना चाहिए। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में यहाँ मैं देखो लिखा हूँ, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में मैं एक काम करता हूँ, वीडियो ऑफ कर देता हूँ ताकि तुम्हें ठीक से दिखे, ठीक है। आ, तुमको ठीक से दिखना भी तो चाहिए, ये भी तो मेन हमारा मोटिव होना चाहिए, है ना। मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो से शो करेगा ना तो दिक्कत होगा तेरे को भाई, ठीक है। तो चला, हाँ चलो। तो देखो भाई, तुम्हारा यहाँ पे जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो तुम्हारा, इसका मतलब है कि जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जो 2 यूनिट लेस देन द N-2, एन तो था तुम्हारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका जो स्टेबिलिटी है मतलब 2 यूनिट लेस देन द N-2 है ना। तो वो जो N-2 वाला जो सिचुएशन है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो हमेशा इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो ये जो है टी टी जो है वो 2 के साथ मैच कर, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन से 2 यूनिट लेस देन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है यही हो, ठीक है। वही अगर बात करें एनोनिमस बिहेवियर के बारे में, अभी बात किया, तो सेकेंड रो एलिमेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है एनोनिमस बिहेवियर, ठीक है। तो जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप का वो शो करेगा एनोनिमस बिहेवियर, ठीक है, और एबिलिटी फॉर्म करता है, एबिलिटी शो करता है टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, अपने आप से ही करता है। वो जो है डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे तुम नीचे बढ़ोगे, ग्रुप के नीचे जाओगे, वैसे वैसे उसका जो है एबिलिटी वो कम होते जाएगा। तो जो पॉसिबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो इंक्रीज करता है टुवर्ड्स राइट, ठीक है, towards right, okay, towards right of the periodic table due to the increase in number of the valence electrons। नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर में क्या होता है कि जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, जो पॉसिबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो इंक्रीज करता है तुम्हारा, ठीक है, टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ओके, टुवर्ड्स द राइट। ऐसा कर रहे तो लेफ्ट जा रहा है, बट ऐसे करेंगे तो राइट चला जाएगा, है ना। हाँ, ऐसे करेंगे तो मैं वेबकैम में देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करेंगे तो राइट चलेगा, हाँ, टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चलो तो फिर ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया बढ़िया से। हाँ, आगे तो बचा ही हुआ है। एबिलिटी जो फॉर्म करेगा बी पाई बॉन्ड इटसेल्फ का, तो वो किसके साथ जाएगा, तुम्हारा फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप के साथ। आर का तो 3 होगा, 3 होगा, नहीं 5 होगा, तो वो डिक्रीज करता है, यहाँ लिखा है ना, देखो ठीक से पढ़ो। फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप शो एनोनिमस बिहेवियर एंड एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ डिक्रीज ऑन द ग्रुप। और ये जो एनोनिमस बिहेवियर है इसका जो है सेकंड रो एलिमेंट्स के साथ भी देखने को मिलता है, और फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप के साथ भी देखने को मिलता है। फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप सेकंड रो एलिमेंट्स, ऐसा याद रखना।
एज वेल एज बिहेवियर के बारे में और एबिलिटी के बारे में बता ही दिया। अब बात करते हैं एस जो है एस ऑप्शन में, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इस केस में क्या है हमारा जो है इंक्रीज करता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिखा हूँ possible number of oxidation states increase towards right of the periodic table due to increase in number of valence electrons। तो हमेशा वो राइट साइड की ओर जाए, हमेशा वो राइट साइड की ओर जाएगा इंक्रीज होते हुए पॉसिबल नंबर जो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, जैसे ही बढ़ते जाएगा तो ऐसे ऐसे एक्सपैंड करते जाएगा। जितना भी कोवेलेंस को मतलब जुटवाना जो है ऑर्बिटल एक्सपैंड ऐसे ऐसे होते जाएगा, उससे एक्सपैंड चीजें होती जाएंगी तुम्हारे लिए। So thanks for watching this video. Subscribe to our channel. Lecture 2 is just coming very soon, and it will be enhanced with some more updates and content also. I'll try to make it more designful. So, but till now, what I just uploaded in the YouTube channel about the set theory mathematics lecture class 11 is not over yet. It is just being created. Design is being done. Okay, notes is being done. Question is being collected from the sources, and it will be uploaded soon in the channel. Just subscribe to channel, press the icon so you get the video updates. Okay, so it is the kind of last video of the like lecture number one, last thing. So thank you very much for this video. Below there is a comment section. It's free to ask anything. And this by all for now. We are ending the meeting now.